Hi guys, welcome to Hamid Smart Learning Hub. So in this video, I will discussing about budget 2024 जो आज present हुआ है 23rd जुलाई में present हुआ है budget 2024. So आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे some important amendments on income tax and TDS. So without wasting any time, let's start guys. सो फर्स्ट जो अमेंडमेंट है न्यू टैक्स रेजिम के ऊपर अमेंडमेंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले था 50,000 75,000 कर दिया गया ओके फॉर न्यू टैक्स रेजिम सो इफ यू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रेजिम देन यू विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 इंस्टेड ऑफ 50,000 सेकेंड जो अमेंडमेंट हुआ है ये भी न्यू टैक्स रेजिम के अंदर है फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है पहले था 15,000 सो फ्रॉम दिस बजट फैमिली पेंशन का डिडक्शन इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 15,000 टू 25,000 थर्ड जो अपडेट है न्यू टैक्स रेजिम का जो स्लैब रेट भी चेंज कर दिया गया सो अप टू ₹3 lakhs टैक्स इज नील 3 lakhs to 7 lakhs 5% tax 7 lakhs to 10 lakhs 10% 10 lakhs to 12 lakhs 15% 12 lakhs to 15 lakhs, 20% tax, and above 15 lakhs, 30% tax you have to pay. Short-term capital gain under section 111A इसका भी changes हुआ है. So before 23rd July 24, short-term capital gain under section 111A का जो tax rate था 15% and from 23rd July 24, short-term capital gain under section 111A increased to 20%. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रेट 15% से 20% कर दिया गया नेक्स्ट इज LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इसका भी जो रेट था 10% बिफोर 23rd जुलाई 24 बट फ्रॉम 23rd जुलाई 24 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10% से 12.5% कर दिया गया अभी आप कहां पर इन्वेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों का टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया गया एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का जो एग्जेम्पशन लिमिट था पहले था 1 लाख मतलब अप टू ₹1 लाख ऑफ LTCG यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस बट फ्रॉम 23rd जुलाई 24 एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 1 lakh to 1,25,000 मतलब अप टू 1,25,000 आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है एंड व्हेन योर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट एक्सीड्स 1,25,000 देन यू हैव टू पे टैक्स एट 12.5% रेट पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर गोल्ड बॉन्ड एंड डिवेंचर इज नाउ 24 months सो पहले क्या था पहले बिफोर 23rd जुलाई 24 डिवेंचर गोल्ड बॉन्ड का जो होल्डिंग पीरियड था 36 months मतलब before 36 months short term capital gain and if the holding period exceeds 36 months then long term capital gain so holding period 36 months से 24 months हो जाएगा with effect from 23rd July 24 and long term capital gain under section 112 का जो इंडेक्सेशन था इंडेक्सेशन बेनिफिट था ये भी रिमूव कर दिया गया फ्रॉम 23rd जुलाई 24 मतलब अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सपोज अपने जो हाउस प्रॉपर्टी सपोज अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल किया उसका ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग निकलते थे अब इंडेक्सेशन आपको रिमूव कर दिया गया ओके सो अभी कोई CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रॉम 23rd जुलाई 24 क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी रिमूव कर दिया गया एंड टैक्स रेट अंडर सेक्शन 112 पहले जो 20% था 20% से 12.5% कर दिया गया ओके सो बिफोर 23rd जुलाई 24 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 का पहले इंडेक्सेशन था इंडेक्सेशन रिमूव कर दिया गया एंड टैक्स रेट था 20% टैक्स रेट आपको फ्रॉम 20% 12.5% कर दिया गया नेक्स्ट जो चेंजेस है STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर इंक्रीजेस टू
0.02% from 0.0125% with effect from 1st October 24. So अगर आप फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करते हो देन यू हैव टू पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. सो अभी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम लोग पे करते थे 0.0125% फ्रॉम 1st October 24 से उसका जो STT 0.02% हो जाएगा. मतलब you have to pay more security transaction tax on future. Next is STT on option increases to 0.1% from 0.0625% with effect from 1st October 24. मतलब ऑप्शन का ऊपर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते थे हम लोग अभी जो रेट है 0.0625% फ्रॉम 1st October 24 से 0.1% हो जाएगा. सो ये भी इंक्रीज हो जाएगा. Income from letting out of a house or part of a house by the owner shall not be charged under the head profits and gains of business or profession and will be chargeable to tax under the head income from house property with effect from 1st April 25. ओके सो अगर आपको लेट आउट प्रॉपर्टी से जो इनकम है कोई ऐसी सी रॉन्गली बिजनेस प्रोफेशन में चार्ज किया करते थे सो अब वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको दिखाना पड़ेगा. ओके बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 25. Increase in limit of remuneration to working partner of a firm allowed as deduction. It is proposed to increase the limit of remuneration to working partner to 3 lakhs or 90% of the book profit, whichever is more, on the first 6 lakhs of the book profit or in case of loss, with effect from 1st April 25. Reduction of rate of foreign companies to 35%. Foreign companies का जो taxation rate, income tax rate 40% से 35% कर दिया गया. Alignment of interest rate on delayed payment on TCS with TDS. It is proposed to increase the rate of simple interest from 1% to 1.5% on delayed payment of TCS after collection, as in case of TDS. So अभी अगर अपने लेट पे करते हो TDS में then you have to pay interest 1.5%, but TCS में जो था 1%. ओके सो अब TCS का जो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 1% टू 1.5%. TDS में एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है सेक्शन 194T जो इफेक्ट होगा फ्रॉम 1st April 25. सो TDS ऑन पेमेंट टू ए पार्टनर. ओके अगर आपको पार्टनर को पेमेंट जो पार्टनर को हम लोग पेमेंट करते हैं उसका ऊपर अब TDS कटेगा. It is proposed that payment made by firm to its partner in the nature of salary, remuneration, commission, bonus and interest shall be subject to TDS at 10% if the aggregate amount exceeds 20,000. Okay, with effect from 1st April 25. So if you, as a partnership firm, if you pay remuneration or salary, commission, bonus or interest to your partner, if the amount exceeds 20,000, then you have to deduct TDS at 10% under section 194T. Lower deduction or collection certificate of tax at source. It is proposed to allow for application for lower deduction or collection certificate of tax for section 194Q, TDS on payment for purchase of goods, and subsection 1H of section 206C, TCS and receipt of sale of goods, with effect from 1st October 24. मतलब दो सेक्शन जो है TDS एंड TCS का 194Q एंड 206C 1H इसका ऊपर अब लोअर डिडक्शन टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा. ओके सो आप अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए फॉर द सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C 1H. एंड ये जो इफेक्ट होगा फ्रॉम 1st October 24. Time limit to file correction statement for TDS or TCS statement. It is proposed to provide that no correction statements shall be delivered after the expiry of 6 years from the end of the financial year in which TDS or TCS statement are respectively required to be delivered. मतलब करेक्शन रिटर्न TDS और TCS में हम लोग जब करेक्शन और रिवाइज रिटर्न करते हैं उसका अभी तक कुछ टाइम लिमिट नहीं था. ओके बट फ्रॉम 1st April 25 से जिस साल का आपका करेक्शन करना है उस साल से आप 6 ईयर तक करेक्शन कर सकते हो.
ओके, 6 years के बाद यू कैन नॉट करेक्ट और यू कैन नॉट रिवाइज योर टीडीएस और टीसीएस रिटर्न। अब आपको 1 अप्रैल 25 से बाद में अगर आपको करेक्शन रिटर्न करना है तो 6 years के बाद आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कुछ टीडीएस रेट का रिवाइज, जो प्रोपोज टीडीएस रेट है जो चेंज होगा, ओके, विथ इफेक्ट फ्रॉम, कोई चेंज होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 25, कुछ चेंज होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 194D, सेक्शन 194D, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी। सो अभी जो प्रेजेंट रेट है 5%, proposed rate is 2% and effect होगा from 1 April 25। Section 194DA, payment in respect of life insurance policy, present TDS rate is 5%, proposed होगा 2% rate हो जाएगा from 5 to 2% and with effect from 1 October 24। Section 194G, commission on sale of lottery tickets, present rate is 5%, जो proposed rate होगा 2% from 1 October 24। Section 194H, payment of commission or brokerage, current TDS rate is 5%, proposed rate is 2% with effect from 1 October 24। Section 194IB, payment of rent by individual or HUF, present TDS rate is 5%, proposed rate is 2% from 1 October 24। Section 194M, payment of certain sums by certain individuals or Hindu undivided family, present TDS rate is 5%, proposed rate is 2% with effect from 1 October 24। Section 194O, payment of certain sums by e-commerce operator or to e-commerce participants, अभी जो रेट है 1%, ये 0.1% हो जाएगा from 1 October 24। Section 194F, relating to payment on account of repurchase of units by mutual fund or unit trust of India, proposed to be omitted। So अगर आप म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया रीपर्चेस करते हो, सो 1 October 24 का बाद में आपको फ्रॉम 1 October 24 यू डोंट नीड टू पे एनी टीडीएस। ओके, सो गाइस ये था कुछ अमेंड्स, सो ये था कुछ अपडेट्स ऑन इनकम टैक्स एंड टीडीएस। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको इनकम टैक्स एंड टीडीएस सीखना है, and if you want to learn TDS, income tax, GST, PFNESI, ROC, tax audit, you can join my courses. So for that, you have to go to, you can join my courses. For that, you have to go to my website, hamidswanlearninghub.com, and you have to join the courses from there. For some courses, you will get lifetime support. For some courses, you will get 6 months support. For some courses, you will get lifetime video validity. For some courses, you will get 1 year video validity. So if you want to become tax expert or tax consultant, you can join the courses. Okay guys, so अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, so like and share जरूर करना, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.